Hello students, welcome to the channel. Today we are going to cover an important book written by Michel Foucault, Discipline and Punish, The Birth of the Prison Panopticon. This is part of literary theory for UGC NET students. Please do watch, share and subscribe the channel. Let us continue the video now. इस वीडियो में मिशेल फुको का शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। लॉन्ग इंट्रोडक्शन के लिए आप मेरे ही एक और वीडियो को रेफर कर सकते हैं, व्हाट इज़ एन ऑथर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया और इस वीडियो के एंड में भी प्रोवाइड कर दूंगी मैं। सो उनका पूरा नाम था पॉल मिशेल फुको, बॉर्न 1926 एंड डाइड 1984, जनरली नोन एज मिशेल फुको। ही वॉज अ फ्रेंच फिलोसोफर, हिस्टोरियन ऑफ आइडियाज़, सोशल थियरिस्ट एंड लिटरेरी क्रिटिक। आइए अब बात करते हैं इस बुक की। This is a 1975 book by the French philosopher Michel Foucault, and it is an analysis of the social and theoretical mechanism behind the changes that occurred in Western penal system during the modern age based on historical documents from France. Foucault argues by जेरेमी बेंथम्स पेनॉप्टिकॉन। पेनॉप्टिकॉन क्या होता है ये मैं आपको डायग्राम्स के थ्रू फर्दर पार्ट ऑफ वीडियो में समझा दूंगी। सो फुको आर्ग्यू करते हैं जेरेमी बेंथम के पेनॉप्टिकॉन से, दिस आर्किटेक्चरल मॉडल दो इट वाज नेवर अडॉप्टेड बाय आर्किटेक्ट्स अकॉर्डिंग टू बेंथम्स एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट became an important conceptualization of power relations for prison reformers of the 19th century, and its general principle is a recurring theme in modern prison construction as well. Jeremy Bentham was an English philosopher and social theorist. The panopticon, as you can see in the figure, is a type of institutional building and a system of control designed by him. So we can say panopticon was a design for a prison produced by Jeremy Bentham in late 18th century, which grouped cells around a central viewing tower. सेंटर में एक व्यूइंग टावर होता था और आसपास सेल्स होते थे जिनमें प्रिजनर्स होते थे। ऑल्दो द प्रिजन वॉज नेवर एक्चुअली बिल्ट, द आइडिया वॉज यूज्ड as a model for numerous institutions, including you can say some prisons, even hospitals. Foucault uses this as a metaphor for the operation of power and surveillance in contemporary society. सो आप इस फिगर में और क्लियरली देख सकते हैं, द कंसेप्ट ऑफ द डिज़ाइन इज़ टू अलाउ all prisoners of an institution to be observed by a single security guard. आप लोग ये वॉच टावर देख पा रहे हैं आई होप बीच में। वॉच टावर में वी विल प्लेस सिक्योरिटी गार्ड एंड all the prisoners will be watched by the single guard without the inmates being able to tell whether they are being watched. तो सेल में जो प्रिजनर्स हैं उनको पता भी नहीं चलेगा कि कब और कहाँ और कैसे उन पर वॉच रखी जा रही है। पेनॉप्टिकॉन सिस्टम को देखकर मुझे आजकल के सीसीटीवी कैमराज याद आते हैं। सो पेनॉप्टिकॉन इन शॉर्ट एनी काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल डिज़ाइन वेयर ऑल द इनमेट्स कैन बी ऑब्जर्व्ड. In modern era, CCTV have taken the place of any such idea. You can do central inspection by CCTV and you don't need a round building to do it, monitoring electronic communications from a central location. That is panoptic already. So the real heart of Bentham's panoptic idea is that there are certain activities which are better conducted when they are सुपरवाइज. तो कुछ एक्टिविटीज़ शायद बहुत अच्छे से तभी की जाएंगी जबकि एक्टिविटी डूअर को ये पता है कि आई एम बीइंग सुपरवाइज्ड. मिड 70s में ये कंसेप्ट बड़ा पॉपुलर हुआ था. इन द मिड 70s द पेनॉप्टिकॉन वॉज ब्रॉट टू द वाइडर अटेंशन बाय नॉट ओनली बाय मिशेल फिको बट बाय द फ्रेंच साइको एनालिस्ट जैकस एलेन मिलर एज वेल. In 1975, Foucault uses the term panopticon as a metaphor for modern disciplinary society in Discipline and Punish. Discipline and Punish एक 1975 book है by the philosopher, French philosopher Michel Foucault, and it is an analysis of social and theoretical mechanisms behind the changes that occurred in Western penal system during the modern age based on historical documents from France. Foucault first came across the panopticon architecture when he studied the origins of clinical medicine and hospital architecture in the second half of 18th century. He argued after reading this that discipline had replaced the pre-modern society of
kings, and that the panopticon should not be understood as a building but as a mechanism of power and a diagram of political technology. तो panopticon system भी एक तरीके से power practice ही की जा रही है according to Foucault. Above all else, Michel Foucault believed in the freedom of people, and he also realized that as an individual we react to situation in different way. He used his book as a vehicle to show the various factors that interact and collide in his analyzation of change and its effects. जैसा कि मैंने पहले ही इस वीडियो में बताया, पेनोप्टिकॉन एक तरीके से मेटाफोरिकली यूज़ किया जा रहा था बाय Michel Foucault to explore the relationship between two things. One, system of social control and people in a disciplinary situation, and the power-knowledge concept. In his view, power and knowledge comes from observing others. It marked the transition to a disciplinary power with every moment supervised and all events recorded. The result of this supervision, the result of this surveillance is acceptance of regulations, a normalization of sort stemming from the threat of discipline. तो whenever people are supervised, whenever people are strictly supervised, तो धीरे धीरे वो उस supervision को accept कर लेते हैं as a normal thing, and they have a threat of discipline. को कहते हैं कि लोगों का suitable behavior इस surveillance से नहीं आता but इस panoptic discipline के थ्रू आता है. So suitable behavior is achieved not through total surveillance but by panoptic discipline, and it forces people to conform, population to conform or to follow the powerful people. The action of the observer are based upon this monitoring. The more one observes, the more powerful one becomes. Power के साथ साथ experience और knowledge आता है. The power comes from the knowledge the observer has accumulated from his observation of actions. तो जो भी observer है, जो भी panopticon system को operate करें, they become powerful and they become more and more knowledgeable in the society, and with knowledge and power reinforcing each other. Foucault का concept of power उनके work का एक central part है, and he says power is a relationship between people in which one affects another action. Power force और violence से अलग होती है. फोर्स और वॉयलेंस तो शायद बॉडी को फिजिकली अफेक्ट करते हैं, लेकिन पावर इन्वॉल्व्स मेकिंग अ सब्जेक्ट टू डू समथिंग दैट ही वुड नॉट हैव डन अदरवाइज. तो पावर का अपना ही एक स्टेटस होता है, और उस पावर, उस स्टेटस से इंस्पायर होकर ही द डूअर, द फ्री सब्जेक्ट डज हिज जॉब. सो मे बी अगर पावर नहीं होती, अगर पेनोप्टिकॉन सिस्टम नहीं होता, तो वो पर्सन उस जॉब को ऐसे नहीं करता जैसे वो एट प्रेजेंट कर रहा है. सो पावर देयरफॉर इन्वॉल्व्स रिस्ट्रिक्टिंग और ऑल्टरिंग समवन्स विल, नॉट बाय फोर्स बट बाय सर्वेलेंस. आप जानते हैं इसका सेंट्रल आइडिया. Foucault describes this system as designed not only to punish crime but also to discipline offenders by changing their behavior patterns. The individual is constantly examined and studied in disciplinary society, and it is this condition of feeling constantly observed that also leads people to change their behavior or act in line with how they think society wants them to act. Please do watch rest of the videos about the same author. To join our classes, you can contact as per the numbers given on the screen. Thanks a lot for watching. Please do share and subscribe, and best of luck for your exams.